Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well and staying safe. तो काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे इंट्रो कर रही हूँ, मतलब अरसों बाद। तो गाइज आज हम करने वाले हैं आलिया भट्ट मेकअप ट्राई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब ये गाइज, अगर आपको ये मेकअप देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निक यूज़ करूंगी। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मेरी सोच है। मुझे टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगती है कि हाँ, हम इतने कम प्रोडक्ट से मतलब सिमिलर प्रोडक्ट से हम ऐसा मेकअप कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर आप प्रेफर करते हो कि वही प्रोडक्ट हो, वही सब चीज़ हो, तो तभी आप वो मेकअप करोगे। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई एम जस्ट ट्राइंग टेक्निक। विदाउट फर्दर वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। And then I come up and then I go back inside. Okay. Immediately, like all the blood rushes to my face and I feel like all pink and fresh and like ready to take on stage. The next step is my moisturizer. I love this moisturizer. It's everything my skin needs. I would take like 4 to 5 pumps. My moisturizer, I would go in with sunscreen. Very important. I like to go in with a smiley face. My next step would be, I don't use foundation even if I'm going out for a day SPF in it. Also, yeah, I do have this thing where I use my hands. I don't use brushes when I'm applying any of my tints on my face. I just feel like I get a more even finish. I like to mix that with a little bit of an illuminating primer. Just in 2 minutes. और काफ़ी टाइम से मैंने खरीदी नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा नीड नहीं पड़ी इस क्रीम लगाने की। मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती फाउंडेशन वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ टेंट, मस्कारा और ये सब लगाती हूँ, लिपस्टिक, बस जस्ट इनफ। और अभी हम सीसी क्रीम बनाएंगे और उन्होंने इल्यूमिनेटिंग वो भी मिलाया उसमें, प्राइमर, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ यार, समझ नहीं आ रहा। तो रहने दो फिर। इट्स ओके, हम सिर्फ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं गाइस, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड दैट। सो लेट्स मेक सीसी क्रीम। भाई सीसी क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फाउंडेशन, जो कि थोड़ा सा लाइटर शेड है, बहुत ही कम सा लिया है मैंने। इसके बाद मैं डार्क वाला लूँगी एंड अभी मैं इसमें सनस्क्रीन मिलाऊंगी एंड एक और चीज़ मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। इसको थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा शिमरी शेड ले रही हूँ, जो कि मैं इसमें मिलाने वाली बहुत ही कम सा, बहुत ही ज़्यादा सा। मिक्स काफ़ी अच्छी सी एक सीसी क्रीम बन चुकी है गाइस। अभी मैं इसमें थोड़ा सा सनस्क्रीन और मिला लेती हूँ, मुझे कम लग रहा है। सो लेट्स ट्राई दिस। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। Wow guys, it's working. You can see the glow guys, कितना अच्छा सा लग रहा है, मतलब it's working। तो अभी इसके बाद जो मैंने यूज़ किया है वो यूज़ किया है कंसीलर। तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रही है मुझे कंसीलर यूज़ करने की, क्योंकि NARS creamy concealer. I have this little assistant guy who's been following me for quite a few months बहुत ही now. मिनिमल सा, बहुत ही ज़्यादा सा। I'm being friendly. Now I'm obsessed with picking my pimples, and that's एंड गाइस कुछ खरीदना तो खरीद लो प्लीज़, हमारे घर के बाहर कुछ कोई बेचने आ रहा है। इग्नोर गाइस। इनफ, अभी देखते हैं क्या करना है और नेक्स्ट स्टेप। don't need. So guys, now I'm applying फेस पाउडर, जो कि कॉम्पैक्ट पाउडर, सॉरी फेस पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैंने अपने सारे जो ब्रशेज हैं वो सब भूल के आ गई देहरादून में, और अभी मेरे पास कोई भी ब्रश नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक ये ब्रश मिला जिसमें पाउडर लगाऊंगी। This is just one layer, by the way. I do apply blush as well, but I like to build this into the skin. कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास सिमिलर शेड नहीं था उसका, क्या बोलते हैं, ब्लशर का, तो मैंने कुछ ऐसा सा बनाया है। तो नाउ आई एम अप्लाइंग। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। वाओ
बिल्कुल शेम बना दिया गाइस मैंने, मतलब टेक्निक तो है यार। गाइस मजबूरी के चलते मेरे पास कोई आई शेडो ब्रश नहीं है, तो इसी से ही हमें आज आई शेडो लगानी पड़ेगी। और शी इज यूजिंग I दिस move कलर a lot in this pink सिमिलर शेड है। zone. After that, I would go in with this and I would mix this a little bit. I'm obsessed with putting this. अभी वो अंडर आइज भी लगाती है तो हल्की सी शाइन देने के लिए। And then I would just go for like a little lighter, shinier peaches and cream. Wow, guys. And guys, now she is doing up eyebrows. Made fun of my brows initially, being like, why can't she do something about her brows? The weirdest place. So guys, after eyebrows, she is doing again applying concealer. I don't know why she is applying, because need नहीं होती इसके बाद लगाने की, but Again with my concealer. Do this. I'm not sure whether it's helping, but it just feels great. And I just like go all over. Distracted because I'm like singing and literally like, and I just. and again blusher. And when I went for the Met Gala as well, I think one of my major like Guys, literally I'm obsessed with this क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी सी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। कोई मस्कारा यूज़ नहीं किया, कोई लाइनर यूज़ नहीं किया एंड कुछ भी नहीं लगाया, तो मेरा तो मस्कारे के बिना काम नहीं चलेगा, तो मैं तो मस्कारा लगाने वाली हूँ। और अभी सिर्फ लिपस्टिक बाकी है एंड ओवरऑल मेकअप डन हो चुका है। लिपस्टिक जैसे मैंने लगाई है और यहाँ पे लिया मैंने ब्राउन सा शेड। The reason I do this, I'll tell you why, is because a lot of times I have to either touch up my lipstick. I don't know. I think something about moving the lipstick across my mouth is just way more tedious as opposed to moving my mouth across the lipstick. I thought that's just something that I worked out for myself. And then I rub it off. Because one thing and now rub it all. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। मतलब कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है, इवन हाईलाइटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मस्कारा मैंने खुद से लगाया, मैं मस्कारा भी नहीं लगाया, बट आई एम लव। वीडियो अच्छी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसी लगी वीडियो। और बस मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लुक के साथ। एंड गाइज एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ना अभी मैं ना कुछ ऐसी रिक्रिएटिंग वाली सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अलग अलग लुक आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बस